Let us begin. Today is a very important lecture. We are going to do the electric field graphs. And if you know these graphs, you'll be able to solve questions. Otherwise, it becomes really difficult, right? The concepts that I'm going to give you are very important here, right? Very useful. Graphs of electric field strength and electric potential of a positively charged sphere, charged metal sphere. So first of all, I'm going to talk about electric field strength graph. So we have a solid metal sphere here. It is positively charged. The field lines are going to protrude like this, all the way like this. So first of all, I'm going to draw the electric field strength graph of this. It's a positive charge here, and I'm going to draw the electric field strength graph. We have electric field on the y-axis. We have distance here on the x-axis. This is the electric field strength. This is in Newton per coulomb. We have here the displacement in meters. So if this is R and this is 2R and this is 3R and so on, what sort of graph can you expect? अच्छा, इसकी जो value होगी till R, it will be what? 0. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक वेक्टर है, और ये देखिए ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे इनसाइड. ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक वेक्टर है. So electric field strength is a vector, and what's going to happen is that till R, from the center of the charge till that surface, the electric field strength is 0. To complete cancellation. At R, the electric field strength is maximum. And as we move away, you know that electric field strength can be written as Q over 4 pi E naught R square, right? This is the formula for the electric field strength, right? And if you look closely, this electric field strength is inversely proportional to the square of the distance. So what's going to happen is at 2R, can you tell me what is the value of E? In terms of E, what is the electric field strength? Value kya hogi? That is what they ask in the exam. They want you to draw this graph and they give 3 marks for this. And they want you to plot this exactly what they need, right? Then you need to know the electric field strength at 2R, at 3R, and so on. It's E over 4. Why? Because you see that R is in square here, right? So this is Q over 4 by E naught. R की जगह आ जाएगा 2R. ठीक है, मैं यहाँ पे इसको 2R कर देता हूँ. So this is going to be Q over 4 by E naught times 4R square. And if you look closely, this is Q over 4 by E naught R square times 1 over 4. So this is E by 4. So what's going to happen is at 2R, you're going to have a value which is E by 4. So it's going to be somewhere here, right? 3R पे it would be E by 9. Surface पे maximum है, so distance 0 है. Electric field यहाँ पे तो cancel हो रही है ना अंदर अंदर, क्योंकि vector है. So it's going to be a graph which is precisely like this. It will approach it and it will reach 0 at infinity. So this is, here we have E by 4. At this point we have E by 9. So this will score you 3 marks if you plot it like this. Graph of electric potential of a solid metal sphere of radius R isolated in space. So we have something like this. And if you have V here on the y-axis and we have R here on the x-axis, what's going to happen? What sort of graph can you expect if you have R here
and this is 2R, and this is 3R, and this is 4R. Formula of the electric potential is V is equal to Q over 4 pi E naught. अगर आप थोड़ा गौर करें तो R तक it's going to be a line like this. It's a constant potential. Why there is a constant potential? Because there is no electric field inside. There is no electric field inside this sphere. ठीक है? Charge is present. ठीक है? इसकी surface पे electric field मतलब cancel हो रहा है ना? Electric field zero था. तो एक value सिर्फ एक value है potential. मतलब charge आपके पास जो है उसकी एक potential की value दे रहा है क्योंकि electric field strength अंदर तो zero है. अच्छा उसके बाद R के बाद क्या होगा? It's going to decrease like this. V is proportional to 1 over R. So it's going to be 2R पे जो value होगी that is going to be V by 2. 3R पे value होगी V by 3. ये थोड़ा different है उससे. 2R पे शुरू में R तक हमेशा ये constant रहेगा, ये याद रखिएगा. ठीक है क्योंकि electric field inside is zero. अंदर तो electric field strength zero है तो एक value of potential. Potential की एक ही value है. Constant value till R. उसके बाद what's going to happen is it's going to go like this. Like this. तो अगर आप थोड़ा गौर करें तो यहां पे इसकी वैल्यू आ रही है v by 2, 3R पे इसकी वैल्यू आ रही है v by 3, 4R पे v by 4. So this is the graph of the electric potential. Graph of electric potential of a solid metal sphere of radius r isolated in space. ये दो ग्राफ्स पेपर के पास पेपर्स के क्वेश्चंस में आए हुए हैं, राइट? लेट्स बिगिन. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू, ये रिजल्टेंट उसका पैटर्न एक बनेगा, ठीक है? ड्यू टू two charged spheres of equal charge, for example, let's assume that they are equal charges, and I've already told you that electric field strength is a vector. So we have here the electric field strength like this on the y-axis. I'll call this Newton per coulomb. This r is the distance, let's say, and we have here two charges which are like this. This is one charge, there's another charge here, right? एक ही पे आप बनाएंगे जी, दोनों आपके पास पॉजिटिव स्फीयर्स है, इक्वल चार्ज है, तो दोनों का पॉजिटिव. ठीक है, ये आपके पास लेट्स से दिस इज स्फीयर ए, दिस इज स्फीयर बी, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. These are two solid metal spheres, and they are they are situated in a vacuum, let's say, and their centers are separated by a distance. Okay, and both spheres are positively charged. You have to draw a graph. Let's say this is the radius, and this is also the radius. So what sort of graph can you expect here? देखिए पॉजिटिव चार्ज एक ये है और एक पॉजिटिव चार्ज ये है, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा. ऐसा होगा कि नहीं होगा? They will repel. इसका मतलब है इसकी सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर, इसकी डायरेक्शन और उसकी डायरेक्शन फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में. मतलब एक का फील्ड अगर फील्ड डायरेक्शन इस तरफ है, दूसरे की फील्ड डायरेक्शन ऑपोजिट साइड पे है, और दरमियान में एक ऐसा पॉइंट आ रहा है हियर वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज कैंसलिंग आउट, इट्स जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ cancels out here in the middle, right? Because they are equal charges somewhere in the middle. अगर equal ना होते तो जिसका चार्ज ज्यादा था तो उसका ज्यादा इफेक्ट होता और वो आगे जाके होता. तो होगा क्या कि R तक इस तरह से जीरो होगा, अभी हमने देखा था ऊपर सॉलिड मेटल स्फीयर का. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये आएगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे, और ये भी इस तरह से होगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये मैक्सिमम वैल्यू पे आएगा लाइक दिस. उसके बाद something like this. This point here is the point where the electric field strength is cancelling out. The electric field strength is zero. The resultant electric field strength is
0 here, right? This is a very common question in the exam. Okay, moving on. What if I have two solid metal sphere and they are oppositely charged? So I have here something like this. So we have something of this sort, and we have something of this sort, right? And I have one sphere here, and I have one sphere here. So these are, I'm going to write here, graph of electric field strength of one positive charge and the other negative charge. These are two opposite charges, right? And let's say this is the radius r. This is also the radius which we have as r, right? And this is the distance. This distance is r. And this is the electric field strength. So what's happening is that if you look closely, one charge is positive, the other charge is negative. So the electric field lines are going to go from here like this, right? So you see that what's happening is the electric field strength is not becoming zero anywhere, although it is decreasing as you move away, but it is not becoming zero. So what's going to happen is that we would have something like this. Till R we have zero electric field strength. This is going to be here, and since it's not canceling out, and it's a vector, and it's going to go come here like this. This is going to be like this. And what's happening is that since there are charges of equal magnitude, the minimum point is at the center. अगर एक चार्ज ज्यादा बड़ा होता तो वो आगे जाके आता मिनिमम पॉइंट. अगर पॉजिटिव चार्ज बड़ा होता तो वो आगे जाके मिनिमम पॉइंट. Let's draw the graph of the electric field strength of two oppositely charged solid metal spheres which are of unequal charge. Okay? For example, I have here something like this. Let's say one charge is greater than the other, right? For example, this one is, for example, plus 25. I'm just giving an example, coulomb, right? And let's say this is minus 10 coulombs, right? The charge. The radius of this is r. The radius of this is also, I mean, according to that, it would be r. Uska apna radius hoga. This is the distance. Here we have the electric field strength. What's going to happen is that till r, it's going to be 0. Then it's going to be maximum at the surface, right? Since electric field strength, it cancels out inside this sphere, it's maximum at the surface. And what's going to happen is that the minimum point is going to be ahead, further ahead. This is going to be like this. It's going to shoot, but you see that the height gained is low because it has a lower charge, lower magnitude of the charge. इसका charge छोटा है, ठीक है? It's going to be like this. So the minimum point lies somewhere here. This is the minimum point. As you can see here, the minimum point lies here, right? ठीक है, आगे जाके. So this is the graph of electric field strength of two oppositely charged spheres of unequal magnitude of charge. क्योंकि अगर आप ये ना किया और आप पेपर के सवाल देखें तो आप कहेंगे ये क्या है? ये सब कुछ पेपर्स में इसी तरह से एग्जैक्टली उन्होंने दिया हुआ. Let us move towards the graph of electric potential of two positively charged spheres, right? मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पहले वाले के साथ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है यहाँ पे, अब उसका मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ बना रहा हूं. इस फर्स्ट केस को, ये इसका फर्स्ट है, ये इसका सेकंड है, ये इसका थर्ड है. मैं अब इसके साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा हूं इसको, मतलब उसका पोटेंशियल का बना रहा हूं. So graph of electric potential of two positively charged spheres, right? अगर आप थोड़ा गौर करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? स्केलर.
It's a scalar quantity, right? If I have here something like this, and I have this one is positive, this one is also positive, and we have V here, and this is R. This is the radius R. This is the radius R. Can you tell me what sort of graph can you expect here? अच्छा, दोनों की इक्वल चार्जेस हम कह देते हैं. अगर इक्वल है तो दोनों की हाइट भी सेम होगी, अगर अनइक्वल है तो एक की हाइट कम होगी. मैं इसको इक्वल मैग्नीट्यूड है चार्जेस का. सो इसका भी यहाँ पे देखिए स्केलर स्केलर क्वांटिटी है. V is Q over 4 pi E naught R. तो ये भी पॉजिटिव ऊपर आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा. एंड अगेन it's going to follow the relationship V is proportional to 1 over R. ये आपके पास 1 over R वाला 1 over R square नहीं है ये. वो वाले जो थे उसमें 1 over R square का फैक्टर आ रहा था. तो ये थोड़ा ऊपर ऊपर रहेगा, मतलब जैसे उसका 2R पे E/4 हो गया था, इसका V/2 होगा 2R में. मतलब ये it's going to be somewhere like this. And you see that electric potential is a scalar. So they are going to get added up. Right? Electric potential is a scalar. The electric field strength is a vector. There is a difference. Achha ji, graph of the electric potential of two oppositely charged spheres. One is positive, one is negative. One is positive, one is negative. अब ये इसका जो number 2 है मैं उसको plot करूंगा यहाँ, मतलब उसके corresponding. So one is positive, the other one is negative. We have V here. This is R. This is the radius. This is also the radius. What sort of graph can you expect? एक positive है, एक negative है. And I told you that electric potential is a scalar. And electric potential is V is equal to Q over 4 pi E naught R. If we have positive sphere, then it will be positive. And if we have negative sphere, this will be negative. V will be negative here. So again, till R, it is going to be a constant value for the potential. And here we have again, and then what's going to happen is that it's going to be like this. You see, something of this sort. This is also something of this sort, right? As you can see, it is going to be like this. So this is the graph of electric potential of two oppositely charged spheres. तो ये आपके पास different possibilities हैं that we have. अच्छा, ये जो मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव बनाया, अगर ये नेगेटिव नेगेटिव होता तो वो कैसा होता? नीचे से होते दोनों, वो इन्वर्ट हो जाता. ठीक है, मैं यहां पर ही बना देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल आई हैव हियर, ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड दिस वन इज नेगेटिव एंड दिस वन इज ऑल्सो नेगेटिव, राइट? अच्छा, एक चीज और, चले नेगेटिव है, नेगेटिव तो है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड की बात करें वो ज्यादा है, तो ये ज्यादा नेगेटिव होगा. ये है फॉर एग्जाम्पल -25 और ये है -10. ठीक है जी. तो ये R है आपके पास, ये भी आपके पास R है. तो ये किस तरह से होगा? ये -25 ज्यादा नीचे जाएगा और -10 कुछ यहां पे जाएगा, राइट? और ये इसका मिनिमम पॉइंट भी आगे जाके आएगा. इज दैट क्लियर? मतलब इसका यहाँ पे ये मैक्सिमम पॉइंट बनता है. सो दिस इज व्हाट यू हैव. दीज आर द डिफरेंट ग्राफ्स दैट यू कैन एक्सपेक्ट. तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह आपसे ग्राफ्स, अब मैं आपको इनको डिसिफर करना बताता हूँ कि इसका आपस में इनका क्या रिलेशनशिप बना. ठीक है, लेट्स सी दैट रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. You should know that, for example, I have a charge here. Let's say this is a point charge. And I have a charge here, which is the positive test charge, right? The natural tendency of this charge is to move here. The force is here. But if we try to move this charge here, we'll gain some electric potential energy. Okay, this force would be opposite to this force.
And let's say the distance between these two charges is the distance that it moves is delta r, for example. So मतलब इनके दरमियान डिस्टेंस डेल्टा आर है. डेल्टा आर इज द डिस्टेंस. अगर आप वैसी बात करें वर्क डन की, तो वर्क डन इज माइनस एफ इंटू डेल्टा आर. And if I divide by q here on both sides, this is going to be what? This is going to be, what is W over Q? V. What is F over Q? Electric field strength times delta R. This E is going to be minus delta V over delta R. ये एक्सप्रेशन आपको क्या बता रहा है? ये एक्सप्रेशन आपको ये बता रहा है कि देखिए ना, वो ग्रेडियंट क्या होता है, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स. अगर किसी चीज की बात करें ग्रेडियंट की, तो ग्रेडियंट इज डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स. ऐसे ही होता है. तो अगर हमारे पास वी और आर का ग्राफ है, ठीक है, वी हैव अ ग्राफ ऑफ वी एंड आर. सो नेगेटिव ऑफ दिस पोटेंशियल ग्रेडियंट, अगर हम इसका नेगेटिव ग्रेडियंट लेके नेगेटिव वैल्यू हो उसकी, दैट विल गिव अस द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ग्राफ का ग्रेडियंट लें नेगेटिव, मतलब आप उसका ग्रेडियंट निकालें और उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें. नेगेटिव ग्रेडियंट, द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. जो लोग मैथ्स पढ़ते हैं, जिन्होंने कैलकुलस पढ़ा हुआ है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आप वो करते हैं ना dy by dx डिफरेंशिएशन, तो ये भी वही चीज है dv by dr, नेगेटिव ऑफ dv by dr, राइट. तो खैर, यू शुड नो दैट नेगेटिव of electric potential gradient is equal to the electric field strength at that point, right? So this is a very important relation here, that electric field strength is equal to negative of the potential gradient. I'm going to write it in words here, that electric field strength of the field at a point is equal to the negative of electric potential. फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पे इसका ग्रेडियंट लेते हैं, टेंजेंट, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं आप, ठीक है, और ये आप नेगेटिव ग्रेडियंट ले लें, मतलब इसकी नेगेटिव वैल्यू ले लें, ठीक है, मतलब ये वैसे तो नेगेटिव वो बन रहा है, ये इसका फॉर एग्जाम्पल ग्रेडियंट आ रहा है -5, तो माइनस को जब आप -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा +5. अच्छा जी, ये एक चीज आप ऑब्जर्व करें, इसका अगर मैं ग्रेडियंट लूं, ये देखिए दो पॉजिटिवली चार्ज अफेयर्स हैं. एवरीवन प्लीज, दिस इज एन इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आपको वो पेपर में ऐसे ही सवाल देगा. ये आपके पास दो पॉजिटिवली चार्ज अफेयर है, इसका आप ग्रेडियंट लें, इन दोनों का ग्रेडियंट लें, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ आना चाहिए. अगर मैं इसका ग्रेडियंट लूं स्ट्रेट लाइन का, तो आप देखें यहां पे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा. अच्छा, उसके बाद मैं इसका ग्रेडियंट लूं यहां पे, ये इसका नेगेटिव ग्रेडियंट आ रहा है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है. आहिस्ता आहिस्ता आप अगर देखें तो ग्रेडियंट लेस स्टीप हो रहा है, तो नेगेटिव ग्रेडियंट है, लेकिन नेगेटिव के साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लेकिन क्योंकि लेस स्टीप है, पहले यहाँ पे फॉर एग्जांपल वैल्यू आपके पास ज्यादा आ रही थी ना, अब आपके पास कम आ रही है, तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कम होती जा रही है. यहां पे अगर आप ग्रेडियंट लें इसका, इस पॉइंट पे, मिनिमम पॉइंट पे ग्रेडियंट 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी 0 आ रही है. उसके बाद अगर आप इसका ग्रेडियंट यहां पे लें, ये ग्रेडियंट वैसे पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव के साथ आप नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू नेगेटिव आएगी, देखिएगा ये. और ये अभी लेस स्टीप है, अब ज्यादा स्टीप होती जाएगी आगे. अगर आप यहां पे इसका ग्रेडियंट लें, तो ये ग्रेडियंट ज्यादा स्टीप है, और ये एक पॉजिटिव ग्रेडियंट आ रहा है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई करें तो ज्यादा नेगेटिव वैल्यू.